I'm here again with you with another healthy, nutritious, sweet recipe. I'm preparing this dish for the coming festival of Lohri and Makarsankranti. These two festivals are considered big and auspicious days in a Hindu calendar. So let's move ahead and take a look what ingredients we need to make these laddoos. नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ गुड़ से, तिल से, अलसी के बीजों से और भी चीज़ों से मज़ेदार तिल लड्डू। मकर संक्रांति और लोहड़ी के पर्व पर तिल और गुड़ खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। Around 2 cups of jaggery, 1 cup sesame seeds, 1 cup flaxseeds and few pumpkin seeds। तो हमने जो भी मेजरमेंट यहाँ पे लिया है उसमें एक बड़ा बाउल हमने गुड़ का लिया है और तिल लिए हैं, अलसी के बीज लिए हैं और थोड़े से पेठे के बीज लिए हैं। पेठे के बीज खाना बहुत ही सेहतमंद होता है, इसी तरीके से तिल खाना और अलसी के बीज खाना। My first step will be to roast these seeds। तो दोस्तों पहले स्टेप में हमने क्या करना है, एक पैन लेके ये सीड्स हम रोस्ट करेंगे। You may switch off the flame when the seeds are spluttering. आप फ्लेम को बिल्कुल बंद कर सकते हैं जब ये बीज भुन रहे हों, क्योंकि आपका पैन तो ऑलरेडी गर्म ही है, ये आराम से भुन जाएंगे। तो थोड़ी देर में ही बीज तैयार हो जाएंगे भुन के। Time to grind all of these seeds. आप ये एक बड़ा सा पैन ले लें। Take a heavy bottom deep pan to prepare the jaggery syrup. I have taken this kind of a pan.
ये सीड्स मिक्सचर का हमने पीसा है भूनकर, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एडिंग ऑल द ग्राउंड सीड्स इनटू दिस। लड्डू बनाने के लिए हमारा ये मिक्सचर एकदम रेडी हो चुका है, लेकिन अभी बहुत ही गर्म है ये मिक्सचर। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे और जितना हम इसको हाथ लगा सकें, तो बहुत गर्म है, तो जितना हम हाथ लगा सकें, हमारे हाथ झेल सके जितना गर्म, उतने मिक्सचर से हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, यही छोड़ देते हैं हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, और थोड़ी देर में वापस आके हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग एवरीथिंग वेरी वेल, नाउ इट्स टाइम टू मेक द जैगरी बॉल्स।